Hi Hitesh, how are you? I'm good. How are you, I'm good Dipali? too. I'm good. So we'll just start. So hi everybody, thank you for connecting with Tattva Connect on Instagram Live. I'm sorry we couldn't do it on Facebook because of few glitches. We're happy to be here now. So I am Dipali Patania and I'm an awareness supporter for Tattva Connect. So today we have with us our esteemed guest, Mr. Hitesh, who is a meditation teacher, he's a spiritual guide, and he's also a social servant. So I'll give a short introduction. Mr. Hitesh has been practicing Raj Yoga meditation from past 6 years from Brahmakumaris Spiritual University. Now he has plethora of experience traveling abroad and within India, conducting a lot of workshops with every section of people on every type of topic. So, from the whole team of Tattva Connect, sir, I would like to extend a very warm welcome to you. We are all very excited to have you here and to share a glimpse of, to get insight about all that you know, to get a little insight into your knowledge. So, I'll give the control over Thank to you, to sir. Thank you. Yes, thank you. Thank you so much, Tatva Connect team, because giving a platform for sharing my experience with everyone, I'm really grateful for that. And yes, being a youth, I would like to share my experience and uh, want to, through my experience, through my life experience, I want to share that uh, how spirituality, how meditation is not different from the normal life, because people think that uh, spirituality we will have in our life when we'll be 60, when we are done with our life, तभी Yes. से शुरू करेंगे. But over the years I realized, और मैं सभी से यही शेयर करता हूँ, that uh, whatever is your age, this is the right time to do it, because life के बड़े बड़े decisions, important decisions हमें अभी लेने हैं. And for Yes. that we need power, we need clarity. Otherwise there is no clarity. There is so much confusion. पता ही नहीं क्या करना है. कर भी रहे हैं, we do not know कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के लोग कर रहे हैं. सो Yes. ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है अपने आप से. एक मेंटल पीस होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज वी आर डूइंग एवरीथिंग, बट इफ वी आर जस्ट आस्क आवरसेल्फ, क्यों कर रहे हैं हम ये सब. सिर्फ एक क्वेश्चन कर लें, क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी स्टडिंग so much, why are we working so much. अगर वो क्वेश्चन करना आ जाए ना, दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज. क्वेश्चन करना आ जाए, so we will realize that 90% of the things we are doing for Yeah. nothing, absolutely nothing, unconsciously. कहते हैं ना, बेहोश हैं, पता नहीं है क्यों कर रहे हैं. So इसलिए Yes. ये समझना बहुत जरूरी है. So that's what my experience is. और जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस. Yes. बहुत तरीके की एक्सेप्टेंस होती है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम इन शॉर्ट फॉर्मेट्स. मेन थिंग इज एक्सेप्टिंग what we are, where we are, because we say that acceptance is love. कि प्यार क्या है अगर डिफाइन किया जाए, इट्स द एक्सेप्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमें आकर बोले कि आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, आप जैसे हो, जो हो, आई एक्सेप्ट यू. सो कैसा फील होगा? बहुत अच्छा फील होगा, है Yes. ना? Lovely feeling. Yes. So, Yes. And if somebody asks that, uh, I know you have a few flaws, I know you have some weaknesses, but I just ignore it, I accept you as you are. आज तक जो भी हुआ, let's stop doing it, let's have a perfect start. And जब भी हम किसी से मिलें, किसी से बात करें, and if somebody is just accepting us कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, कितनी अच्छी फीलिंग होती है. But the thing is that we are looking for the acceptance from the people, from outside. But the real acceptance is सेल्फ एक्सेप्टेंस, जिसे सेल्फ लव बोलते हैं. बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं ना, सेल्फ लव, बट ये है क्या सेल्फ लव, राइट? सो सेल्फ yes. एक्सेप्टेंस, फर्स्ट थिंग इज सेल्फ एक्सेप्टिंग इज सेल्फ लव. अपने आप को एक्सेप्ट करना. सबसे पहले तो ये समझना दैट everyone has flaws, so do I.
and I have qualities too. But the thing is, uh, over the years, our parents, our teachers, our friends, they have only focused on, and even myself, I have only focused on my weaknesses. कभी अपनी qualities को बैठ के आराम से सोचा नहीं, cherish नहीं किया, appreciate नहीं किया. Because minds condition आज के समय में जो हो गई है, because of the information we take, surroundings we have, negativity है. So आपने शायद कभी सुना होगा कि there is a syndrome named as missing tile syndrome. That imagine a home. You entered into a beautiful home, new home. The tiles are so perfect, and one tile is missing. Our whole attention will go to the missing One tile, missing not the tile. beautiful. Yes. Same is the case with life. If I am short in height, I will look people who are, whose height is very good. If I'm losing my hair, I will look at people who have beautiful hair. So this is what life has happened. So पहले तो खुद को accept करना that जो भी मेरे में कमी है, it's okay. Everyone is not perfect. So मैं भी नहीं हूँ, उसे accept करता हूँ. एक्सेप्ट करने से एक एनर्जी, एक हीलिंग पावर जनरेट होती है, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट. अगर दुखी ही होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो क्या होगा? चेंज नहीं आएगा. इट इज नॉट गोइंग टू गिव अस द पावर टू वर्क ऑन इट, टू गाइड आवर माइंड. सो एक्सेप्टेंस क्या करती है? एक बहुत सी प्यारी सी एक फीलिंग जनरेट करती है, और फिर हम उसे करने में इजी हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लेट्स से हमें कुछ खेलना बहुत पसंद है, कुछ भी करना बहुत पसंद है, सो वी लव इट, राइट? एंड व्हेन वी लव इट, वी डू नॉट लुक एट द टाइम, वी डू नॉट लुक एट एनर्जी, नथिंग. सो सेम, जब खुद से प्यार होने लग जाता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपने आप को, धीरे धीरे होगा, देन वी डोंट लुक एट टाइम, देन वी सीक सॉलिट्यूड. तब हम लोगों से अलग जाके we'll spend time with ourselves, we will correct ourselves. So this is first thing, which is self acceptance. खुद को एक्सेप्ट करना, मैं जैसा हूँ, जो हूँ. क्योंकि मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ दैट व्हाट इज द रीजन कि अगर 5 मिनट, कैन यू सिट विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर 5 मिनट्स? बहुत से, स्पेशली यूथ, उन्हें लगता है नहीं. क्योंकि अगर कहीं जाना भी है, लेट्स से इफ आई हैव टू गो टू मार्केट, इवन फॉर अ वॉक, वी नीड सम. क्यों? वी नो दैट कि अगर मैं 5 मिनट अपने साथ बैठ के, इफ आई स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, क्या होगा? नेगेटिविटी आएगी, पास्ट का आएगा, फ्यूचर का आएगा. सो समवेयर वी हैव नॉट एक्सेप्टेड आवरसेल्फ. फर्स्ट थिंग, एक्सेप्टिंग सेल्फ. जब खुद से एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, खुद को वैलिडेट करने लग जाते हैं, तो क्या होता है? बाहर से वैलिडेशन ढूंढना बंद कर देते हैं. Otherwise, see, observe your conversations, observe your life, that we are seeking something. We are seeking respect. प्यार से बात करो, आप मेरी बात मानो, मुझे एक्सेप्ट करो मैं जैसा हूँ, आप क्यों नहीं समझते हो, राइट? सो ये साइकिल ऐसी है जो फिर खत्म नहीं होगी. सो क्या करें? खुद को एक्सेप्ट करना है. खुद को एक्सेप्ट कैसे करना है? आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, हु आई एम. मैं जो भी हूँ, खुद को एक्सेप्ट करता हूँ. मेरे में क्वालिटीज हैं, मुझ में कमियां भी हैं, आई मे हैव फ्लॉज, उसे चेक अच्छे से करना है. एंड आई स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. सो आई नो दैट दीज आर माई वीकनेसेस. देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट व्हिच सेज, other people's opinion affect us when we are not sure about ourselves. कहते हैं ना कि दूसरों की बातें हर्ट कर जाती हैं, वो तब करती हैं जब हम खुद को नहीं जानते हैं. सो इफ I know my weaknesses. मुझे पता है कि that I have a bad habit of, let's say, getting irritated. So I know that. I know I'm working on it. अब मुझे पता है कि कितना समय लगेगा उसे सही करने में. So अगर कोई और मुझे बोलता है, then I am unaffected by it because I know it. Where am I on this journey to change this something, right? Yes. So first is accept करना जैसे हम हैं. Second is wherever we are, whatever we do, just accept it. लाइफ में कोई रेजिस्टेंस नहीं. स्ट्रेस क्यों होता है?
वी थिंक दैट ऐसा नहीं होना चाहिए था लाइफ में, ये नहीं होना चाहिए था, इस इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे पेरेंट्स को थोड़ा एडुकेटेड होते तो अच्छा होता, मैं बड़े शहर में होता तो ऐसा होता, मैं वहां होता, मैं एक्टर होता, मैं प्लेयर होता, बट सो मेनी थिंग्स, राइट? सो हम Yes. क्या कर Good. रहे हैं? वी आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर सेल्फ वेयर वी आर। ऑफ कोर्स देयर इज रीजन बिहाइंड इट कि जहां पर हम हैं उसके बहुत से रीजन हैं, but still we can be grateful about it, because even if we look at our life, wherever we are, whatever you do, whoever is listening, maybe you will agree to this, that the life we are living is a dream of millions. So हम जो भी कर रहे हैं, जहां भी हैं, if we are able to see this session, it means we have more than what we need. So मेरी जो लाइफ है वो करोड़ों लोग सोच रहे हैं काश ऐसी लाइफ होती। सो जस्ट एक्सेप्ट करते हैं, चेक करते हैं कहाँ लाइफ में रेजिस्टेंस तो नहीं है। रेजिस्टेंस कब होता है? व्हेन वी डोंट एक्सेप्ट वेयर वी आर। ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, पास्ट ये नहीं होता, वो नहीं होता, वी कैन नॉट चेंज इट, राइट? सो बार बार अपने आप से बात करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं, वी नो दैट, ये सब बातें हमें पता है, लेकिन रोज इट्स एन एवरीडे वर्क, रोज मन को समझाना पड़ेगा। दिस इज अ सेल्फ टॉक दैट आई एक्सेप्ट वेर एवर आई एम। मैं जहां हूं खुद को 100% एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि ब्लूम वेर एवर यू हैव बीन प्लांटेड। हैव यू सीन सम फ्लावर्स? कहीं भी वो बड़े हो जाते हैं, सॉरी, प्लांट्स कहीं छोटी सी जगह मिलती है, थोड़ी सी मिट्टी में भी वो कैसे बड़े हो जाते हैं। So it doesn't matter where we are born, who we have in our life, we can still grow. So I accept myself, I accept others as they are, जो भी मेरी लाइफ में है, मैं जहां भी हूँ। एंड थर्ड इज यस, एक्सेप्टिंग अदर्स। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस का फैक्टर है, गुस्से का, इरिटेशन का, क्योंकि हम चाहते हैं सभी हमारी तरीके से चले, सब मेरी हम कहते हैं कि इसे समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ये सही है, ये गलत है, ये मेरे एंगल से क्यों नहीं देख पा रहा है, राइट? Yes. सबकी क्वालिटीज अलग हैं, सबका नेचर अलग है, जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना ठीक हो जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन आता रहेगा कि इसे इतनी भी समझ नहीं है, कहते हैं ना कि Yes. इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? इस वजह से प्रॉब्लम आती है, लेबल्स लगा रखे हैं हमने। तो क्या करना है? जो भी है, जैसा भी है, उसे एक्सेप्ट करना है। अगेन इट विल नीड प्रैक्टिस। पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिचुएशन आने के बाद नहीं। सुबह ही अपने माइंड को समझाना पड़ेगा दैट आज लाइफ में जो भी होगा, आज पूरे दिन में जो भी होगा, आई विल एक्सेप्ट इट। कोई रेजिस्टेंस नहीं। मुझे कोई मिलेगा, somebody will talk negative to me, somebody will get angry to me, somebody will get irritated, some will not listen to me. I accept, already I accept. Everyone has their own power, which means यहाँ spirituality काम आती है। अगर हम फिजिकल लेवल पे दुनिया को देखेंगे, वी ऑल आर सेम, राइट? दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है, फिर हमें समझ नहीं आएगा कि इसे ये कॉमन सी बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि इसे ऐसे करना है, इसे ऐसे नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी हमें ये बताती है दैट एवरीवन's पावर, सोल पावर इज डिफरेंट, माइंड कैपेसिटी इज डिफरेंट। सबकी धारण करने की शक्ति अलग अलग है, सेम नहीं है। एक ही चीज मैं 10 लोगों को बोलूंगा, उन्हें उसमें से कुछ को समझ आएगा, कुछ को समझ नहीं आएगा, कुछ उस बात को समझेंगी, सुनेंगी ही नहीं। इट्स अ रेशियो। तो क्या करना है? एक्सेप्ट। जैसे है, जो है, दे आर प्लेइंग परफेक्टली देयर रोल परफेक्टली, मुझे बस एक्सेप्ट करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें सेल्फ टॉक्स हैं, एंड इसे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, अगेन पहले प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर क्रिकेट मैच में हम फाइनल में सीधा सीधा चले जाएं, हम खेल नहीं पाएंगे। नेट प्रैक्टिस जरूरी है।
सेम मेडिटेशन का मतलब ही ये है नेट प्रैक्टिस करना, अपने आप को पहले ही मन को समझा देना। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, दिस इज सेल्फ काउंसलिंग, सेल्फ टॉक। बस दिन के 15 मिनट 20 मिनट शुरू में खुद को देने हैं, कभी भी देने हैं, डजंट मैटर। अपने आप को करेक्ट करना है, अपने आप को रेडी करना है। आई ऑलवेज से टू माई सेल्फ इन द मॉर्निंग दैट आई सेट माई इंटेंशंस फॉर द डे, कि आज मुझे एक्सेप्ट करना है चीजों को। फॉर एग्जाम्पल एनी वन थिंग, कि आई विल एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, नो रेजिस्टेंस। उससे बहुत पावर मिलती है, बिकॉज वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। मैंने अपनी इंटेंशन सेट कर दी कि ऐसे ऐसे दिन मेरा जाएगा, आई ऑलरेडी सेंड द पॉजिटिव एनर्जी, सो माइंड को क्लैरिटी रहेगी कि ओके, रिएक्ट करना ही नहीं है, पीसफुल रहना है। सो ये कुछ बातें हैं, और डेफिनेटली लास्ट में 2-3 मिनट में हम मेडिटेशन भी करेंगे। बट दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस, कि हर चीज को एक्सेप्ट करना, लाइक फ्लोइंग रिवर, it does not create any resistance when rock comes in front of it. It just makes it, it just accept it कि कोई बात नहीं, situations तो आएंगी लाइफ में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, हम सोचते हैं सिचुएशन ना आए लाइफ में। इवन इफ वी टॉक, भगवान से भी यही मांगते हैं, भगवान गॉड सिचुएशंस ना आए। सिचुएशंस तो आएंगी, गॉड हिमसेल्फ सेज की सिचुएशन आएंगी और ज्यादा आएंगी, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि सिचुएशन ना आए, सिचुएशन आए, बट आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल बी हैप्पी, आई विल एक्सेप्ट इट विद अ स्माइल, कोई इश्यू नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सेप्टेंस, दीपाली। Thank you so much, sir. So, further apart, I was mesmerized by all that you said, and I resonated on it on a very general level. Like today, we're in a race. We want validation from everybody. We want validation from likes and followers from social media, and it's also become very important to understand that people, your number of likes and number of followers does not validate you. It's not the essence of your existence. Well, thank you so much, sir, for teaching us all about acceptance. So, for me and for all our viewers, I would like to ask you to tell us more about yourself, how your journey started from being an engineer to where you are now. Yes. It's a very long but interesting story, but I'll keep it very, very short. Um, yes, I'm a mechanical engineer, and I was working in a very good, reputed Japanese MNC. And if you're an outsider, if you look at my life, कोई भी मेरे friends थे, जो भी मुझे देखते थे, I had a perfect life. अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो, right? Yes. Everything was good, and सब कुछ परफेक्ट था, बट स्लोली स्लोली, मैं शुरू से ही मेडिटेशन मेरा शुरू से रहा है, पीस हैप्पीनेस हमेशा स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से ही रही है। बट जो कॉर्पोरेट्स के प्रेशर्स होते हैं, काम का प्रेशर, पोजीशन का प्रेशर, एंड रिलेशनशिप्स जो आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं आज के टाइम में, all those things just took away my power, inner power, जो माइंड को पावर पीस होती है, वो सब धीरे धीरे जाने लग गई। एंड आई रिमेम्बर दैट I used to be a very bright student, bright employee of the company, but few things started happening, and ऐसा हुआ that I know कि ये मुझे करना है, ये मैं कर सकता हूँ, this is very good, easy for me, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। और मेरे अंदर से ही नहीं आ रहा था कि मैं ये करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है। सो इट टुक मी टाइम एंड some wasted some months to realize that why is it happening. इसलिए एक दिन बहुत ज्यादा हो गया था, so I picked myself, I said no, that's all, अब मुझे अपने ऊपर काम करना है। so I started meditation and self talk। वो जब सीखा, implement किया, then there was instant change in myself, और बस उसने सब कुछ चेंज कर दिया। एंड देयर वाज
सो आई स्टार्टेड गोइंग, उसके साथ साथ जब मैं दिल्ली में ही था उसके साथ साथ कहीं कहीं जाने लग गया, स्कूल्स कॉलेजेस में. एंड आई वेंट फॉर अ ट्रिप फॉर 15 days टू असम. वहां पर हम एक कैंपेन चला रहे थे. एंड वी वर every day we used to go to school, colleges and villages and talk to people about peace and happiness. तो जब वो those 15 days were the most beautiful days of my life. I realized deep in my heart that my engineering, there are a lot of engineers in the world out there. अगर एक इंजीनियर कम भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट पीपल नीड पीस, पीपल नीड हैप्पीनेस. उन्हें बताना है कि कैसे करना है. सो दैट जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग. आई केम बैक एंड विद इन अ मंथ आई अगेन वेंट फॉर अ ट्रिप, और उसके बाद मैं दिल्ली वापस नहीं आया. इट्स बीन 3 years. सो It's a very दैट्स जस्ट interesting चेंज्ड story. एवरीथिंग. It's a very Yeah. interesting story, sir. Very, very interesting. Apart from that, I would want to know what is your definition of acceptance? Like everybody has different ways of understanding a word. Everybody has different ways of trying to understand what a word means, what it means to them, what it means to how it relates to them. So, how would you describe acceptance? As I said, that acceptance for me is love. If we observe our life, when I started observing that if I'm meeting someone and that person is just accepting myself, appreciating myself, कि हाँ नहीं नहीं ये तो बहुत सही है, because even if we are low at our life, अगर चीजें सही भी नहीं है, but even if someone accepts us, says it's okay, it will take time, it's okay, you have my support, carry on. So this is what acceptance is, कि कोई क्वेश्चन नहीं कि क्यों नहीं किया, मैंने बताया था आपको, ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, ये गलत सोच रहे हो आप, कुछ nothing, just nothing, no burden of the past, today बस ऐसे देखना. So this is what acceptance to me is, कि मैं जहां हूं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, फ्लॉज है. सी एक्सेप्टेंस आएगी तो क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी देन विल बी एबल टू एक्सेप्ट द फ्लॉज, अदरवाइज विल नॉट, विल ब्लेम, विल कीप ब्लेमिंग पीपल आउटसाइड. तो जब मैंने ये शुरू किया तो समझ आया दैट अपनी कमी को, लेट्स से आई हैड, विल यू बिलीव दैट आई हैड अ fear of speaking in public. I cannot imagine that. And look at me now. So जब वो कमी थी, I accepted it that okay, I fear what people will say. But वो accept करते करते, खुद को accept करते करते that everything is not going to be perfect, शुरू करना ही पड़ेगा, perfect होने का wait नहीं कर. So acceptance to me is simple, that feeling of being in the present, no question about future, no question about past, क्या कैसे, just this moment. This is what acceptance is. It's a very good definition, sir, because as today's youth, I think we all are not so, we don't want to accept reality. We all want to create an illusion of what's not true. If we create an Instagram image, we post pictures, something which sometimes it's not ours also. We create a beautiful picture for others to see, but then to think that, oh my god, he has a beautiful life or he or she is living a nice life. And the reality is quite different from what not accepting ourselves and resisting if we are at a low point in our life. Like we don't want to accept failures right now. It's quite difficult to be. It's a quite difficult time, and then to not accept things is very messy. Thank you so much for Absolutely. telling us I on that. always say that don't compare your real life with others' real life. So always Yes, accept. yes, yes. That was spot on. Yes. So, sir, apart from that, I would also want to know, how is it that we can also start to, apart from telling ourselves that yes, we'll accept it, is there any exercise or something we can focus on to get ourselves to accept what we are, and then accept ourselves, accept our flaws and our mistakes, but what we have done is done, and we
today is a day and we can improve it from today. And we cannot change what Right. has happened, but we can change what is about to happen. Absolutely, absolutely. So let's do one thing. Let's have a quick 2-3 minute meditation, self-talk, कि कैसे अपनी day की या even when we get a minute or two, how to talk to self so that we can bring our consciousness to acceptance and then we start doing the things. Right? So just free yourself from all other things. No past, no future, no people. अभी क्या करना है, आधे घंटे बाद क्या करना है, nothing. Just focus on this present moment. No comments. Just listen and ask yourself, when was the last time I was truly present? आखिरी बार ये कब था मेरा पूरा ध्यान प्रेजेंट पे था, मन भी यहीं था. No thoughts about future or past. And ask yourself, I may have problems in my life, but what problem do I have right now? इस मोमेंट पे क्या प्रॉब्लम है? Let the mind seek the answer. आंसर आ रहा है इस मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं. Either in the past, future, or resistance. So I accept myself as it is. कुछ नहीं बदलना मुझे अपने आप में. अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ. अपनी कमियों को आज बैठकर being honest with self, खुद के साथ परसेप्शन मैनेजमेंट नहीं. I'll accept every single weakness. कहाँ कहाँ इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, whatever it is, I accept it. And I don't look for acceptance from people. No social media. खुद को accept करना है. And I accept other people as they are. कोई क्वेश्चन नहीं. ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं. No. Let's try it out. People need love. More than guidance, more than advice. People need love, acceptance. I'll be a giver. And I accept the situations as they are. सब कुछ perfect नहीं होगा. It's okay. I have this deep in my mind that everything is not going to be perfect as planned. I accept like a flowing river. No resistance. Thank you. Thank you so much, sir. It's a very powerful exercise.
It's very true. When you actually think about it, there is actually no problem right now. It's all in our head. Okay, thank you so much for connecting with us. Thank you so much for giving us your valuable time and to share your knowledge with us. It was lovely Thank you. having you on Tattva Connect platform, sir. Thank you. Thank you so much, Dipali. And I always feel grateful whenever I get a platform to talk about it, and just so grateful about it. So keep doing as a team whatever you are doing. And of course, I am with you all. So best wishes for all the future endeavors. And yeah, Thank you so much, sir. Thank you. thank you. So I'll just end it now. Yes, please.